सूरत शहर में पिछले 48 घंटों में दूसरी घटना है, जबकि लोगों में दिन ब दिन डर का माहौल देखा जा रहा है। कल सूरत शहर में लिंबायत इलाके में एक रिक्शा चालक पर तलवार और चाकू से वार किया गया। सूरत के लिंबायत इलाके में 3 महीने पहले हुई मारपीट में एक रिक्शा चालक के सिर पर तलवार और हथियार से और पत्थर मारने से उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन की जानकारी के अनुसार मानसरोवर निवासी 30 वर्षीय रवि वाल्मीकि अहीर 3 माह पहले रिक्शा चलाकर अपने गुजरात में जा रहा था और तभी झगड़े के बाद रंगीला नगर सब्जी के पास 3 लोगों ने रवि पर जानलेवा हमला कर दिया। चाकुओं, तलवारों और पत्थरों के साथ भरे बाजार में मौत के घाट उतार दिया। और लिंबायत पुलिस स्टेशन को सूचना मिलते ही लिंबायत पुलिस मौके पर पहुंची और रवि को इलाज के लिए सूरत के सिमेमेर अस्पताल में ले जाया गया। इलाज के दौरान सुबह उसकी भी मौत हो गई और पुलिस द्वारा तुरंत जांच की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की जांच लिंबायत पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। रवि वाल्मीकि आयरे क्या हुआ था? उसको दो चार लोग दारू पीने लेके गए और उधर मारा मारी की चार तीन जन ने उसको तलवार से मारा, सिर पे मारा, हाथ पे मारा, इस पे मारा। मेरी बच्ची बदते नहीं। क्यों मारा? क्या क्या कुछ पैसे से बोले 30-40 हज़ार रुपया छीन लिए उन लोग ने। और ये उठा जब तक इसको मारी रात में। ये रवि क्या काम करता था? कभी रिक्शा भी चलाता है, कभी दारू भी बेचता है, गलत लोग से ऐसा धंधा करता था। लेकिन मेरे को तो किसका ही सहारा नहीं है। 25 साल हो गया, पति मर गया, एक ही लड़का है। क्या मांगे आपकी? हाँ, क्या मांगे आपकी? मेरे को मेरा बच्चा है वही। गुनेगार पकड़ायला पाहिजे ना। वो गुनेगार पकड़ा जाना चाहिए। वो गुनेगार को जिंदा मत रखना, उनको मत रखना। આજથી 3 થી 4 દિવસ પહેલાં એક વ્યક્તિ રવિ ચીરા એ પોતાના મિત્રો સાથે મનોજ શિવા અને આ પ્રકારના એના 3 મિત્રો હતા એની સાથે બેસી રહ્યો હતો અને એ વખતે આ બંને વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. બોલાચાલીનું વધતા બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને જે ઝઘડામાં સામસામે મારામારી થઈ હતી, જેમાં મનોજ અને શિવાએ ભેગા મળી અને રવિ ઉર્ફે ચીરાને પથ્થર અને ચપ્પુના ઘા મારી અને એને ઈજા પહોંચાડી હતી. આ ઈજા કર્યા બાદ તેઓ ત્યાંથી નાસી ગયા હતા અને જે ભોગ બનનાર છે એને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યો હતો. હોસ્પિટલમાં ટ્રીટમેન્ટ દરમિયાન ભોગ બનનારનું મૃત્યુ થયું હતું અને જે આરોપીઓ છે, પોલીસે આ ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી લીધેલ છે અને આ બનાવ અનુસંધાને જે પીએમ રિપોર્ટ આવશે એ અનુસાર અમે આગળની કાર્યવાહી કરીશું. આ હત્યારાઓ અને જે મરણ જનાર છે આ બધા એકબીજાના મિત્રો છે. અગાઉ પણ તેઓ મારામારી અને અન્ય બીજા ગુનાઓમાં ડિંડોલી અને અન્ય વિસ્તારમાં લિંબાયતમાં બધે સંડોવાયેલા છે અને અત્યારે જ્યારે એ લોકો ભેગા બેઠા હતા ત્યારે એ લોકો મિત્રતાના નાતે જ બેઠા હતા અને કોઈ પણ કારણસર બધા વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો અને ઝઘડાનું સ્વરૂપમાં અને આટલી ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી અને આજે એનું